Hello, everyone. Welcome to the Farmer Struggles, Successes, Lessons and Future. मित्रों, हमारे वेबिनार में आपका स्वागत है। हमारा टाइटल है किसान आंदोलन, उसकी अचीवमेंट्स यानी कि उसके कामयाबी, उसकी सीख और उसकी फ्यूचर यानी कि आगे क्या होगा। मेरे रिमार्क्स आज मैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स देने वाली हूँ। मैं अंग्रेजी में बोलूंगी, माफ कीजिएगा। हम अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने वाले को किसी को हम ढूंढ नहीं पाए हैं, तो लेकिन सिर्फ मेरे रिमार्क्स ट्रांसलेटेड नहीं होंगे। बाकी जो भी अंग्रेजी में बोला जाएगा हम कोशिश करेंगे कि कोई ट्रांसलेट करे। ओके। So, hello everyone, and welcome to Farmers' Struggles, Successes, Lessons and Future, a webinar with Mr. Rakesh Tikait, who is one of the most important leaders of the now world-famous farmers' movement of India, and he joins us fresh from its recent victories. My name is Radhika Desai, and I'm the director of the Geopolitical Economy Research Group, which is one of the co-sponsors of this event. As you probably see from our publicity, this event has attracted a lot of co-sponsors. My colleague Daljit Singh will soon be introducing Mr. Tikait more fully. Let me say here that in my eyes, Mr. Tikait is important for at least 3 reasons. There are probably many others, but these are very important to me. Mr. Tikait has brought his very large Bharatiya Kisan Union into the farmers' movement, which eventually all the different organizations that constituted the farmers' movement created the Samyukta Kisan Morcha, or the United Farmers Front. The BKU is one of India's oldest and most iconic farmers' organizations. It dates back to the days of the 1970s when Chaudhry Charan Singh, another major farmers' leader of India, organized the country's first farmers' protests that announced that the divide between town and country was not only alive and well, but would go on to shape the country's politics. Secondly, so Chaudhry Charan Singh's farmers' movements announced that the divide between town and country was alive and well. And it also sort of was the harbinger of the fact that these movements would soon shape the country's politics fundamentally. Secondly, Mr. Tikait doggedly refused to leave the encampment outside Delhi in late January 2021, when the central and UP governments, both BJP governments, sought to use certain incidents that occurred during the Republic Day rally in 2021 against the farmers' movements, to delegitimize it, to divide it, and to defeat it. Many believe that Mr. Tikait's refusal saved the movement. Mr. Tikait broke down that day before cameras, aware of the sheer weight and moment of the forces that were up, that his movement was up against, knowing the injustice of it all. However, his tears were righteous, and they proved the elixir that revived the movement at one of its most critical junctures. Finally, during a huge Mahapanchayat or Grand Council, this past 5th of September in Muzaffarnagar, he introduced an important new element into the movement. Muzaffarnagar is the site of historic riots between Hindus and Muslims that have enabled Hindutva forces, the forces of Hindu nationalism of the Prime Minister's party, to gain electoral ground. There, on that ground, he revived the tradition of chanting Har Har Mahadev and Allahu Akbar together. That is to say, the chants that characterize the Hindus and the Muslims of the region, chanting them together, symbolizing the unity of the region's Hindus and Muslims, and more broadly interreligious unity. Along with the massive participation of women in the movement, this unity has become a distinctive trait of the farmers' movement and promises much for India to come. Welcome, Mr. Tikait. We are very honored to have you. Tikait Sahab, aapka bahut hardik swagat hai. My colleague Daljit Singh will presently introduce you more fully. Daljit Singh, aapka pura introduction denge. Here, I would like to do 2 more things. First, it would be particularly remiss of me at a webinar on issues of land, agriculture, food, and water, not to acknowledge
that this webinar is being hosted from Winnipeg, Canada, a city that stands on Treaty 1 territory, the stolen ancestral lands of the Anishinaabe, the Cree, Oji-Cree, Dakota, and Dene peoples, and on the homeland of the Métis Nation, and that it draws its water from Shoal Lake 40 First Nation. Secondly, I want to remind ourselves of the historic importance of the movement that Mr. Tickett has helped to lead. The farmers' movement, this part of the farmers' movement started in the summer of 2020 and culminated in a march to New Delhi in November. When it was halted on its outskirts, it soon formed encampments around. They became encampments of defiance. Many people imagined they would go away in a week, in a month, but they stayed there. They doggedly stayed there for months, for a year, basically. After a year, during which governments engaged in false dialogues, attempts to undermine and divide the movement, and just plain ignoring it, the government had to concede its main demands, that the 3 odious farm laws, withdrawing what little support remained for Indian agriculture after decades of marketizing reforms, would be withdrawn. The farmers declared victory, but also vowed to continue their movement for key demands, including guaranteed minimum support prices for various crops across the country, and the maintenance of the critically important public distribution system, which ensures that the poorest in India have some minimal access to food and nutrition. The importance of the farmers' protest in India cannot be underlined enough. If you look at the percentage of the labor force involved in agriculture, in Canada, as you may know, it is no more than 2%. In the United States, it's 0.2%. Even in a country like Mexico, it is merely 13%. In China, it is 26%. In India, it is nearly half the labor force at 47%. So the well-being of agriculture, particularly smallholder agriculture, because the vast majority of India's farmers are smallholders. The well-being of this agriculture, the well-being of smallholders is critical to India, to its economy, to its people. It is a matter of life and death. It is the difference between eating and not eating. Because despite decades of advances of the Green Revolution, despite decades during which, after the advances of the Green Revolution, there has been decline in government support for agriculture. Indian agriculture still feeds India's 1.3 billion people, though at a lower nutritional standard than we would consider acceptable. India as yet only imports 0.2% of its total cereals intake. And India is also, as you know, an exporter of many, many important agricultural commodities. If the United States, the WTO, the Modi government, what they have designed for Indian agriculture is implemented. If Indian agriculture is converted into an export cropping area for tea or flowers or what have you, shrimp, to feed Western demand for exotic tropical products, either malnutrition will grow in India to epic proportions, or world market prices for cereals will shoot up. We will all be paying more for our food. Take your pick, whichever you like. So it is very critically important. The movement has united farmers, small, medium, and big, and has had the support also of many important organizations representing agricultural labor. It has united, as I've already said, actors across regions, languages, caste, creed, and gender. It has been up against many forces, the Hindutva government, whose fascist character becomes daily more apparent, a vainglorious prime minister, the media, domestic and foreign, which has persisted in portraying the farmers' movement as economically illiterate. It is they who are economically illiterate. A middle class, domestic and expatriate, who have joined the media in believing this. A corporate capitalist class, which is among the most powerful of any third world country. Indeed, you could say today, at least with the present government, it is more powerful than even many core capitalist countries.
And of course, it is also up against the forces of international neoliberalism, including the World Trade Organization. The victory of the farmers is momentous, and it may well mark the turning of the tide against the Modi government. It may well go, the moment of November 2020, when they won their demands, may well go down in history as the moment when the defeat of Hindutva finally began. Today, we will hear about the movement, its strategy and tactics from Mr. Tikait. And also about what they plan, the movement plans for the future. So let me close my remarks by simply saying that this webinar, which we are fortunate enough to have, was the initiative of the Winnipeg-based Punjabi Literary and Cultural Association, and it is co-sponsored by many organizations: the South Asian Network for Secularism and Democracy, based in Vancouver; Democracy, Equality and Secularism in South Asia, based in Winnipeg; CERAS, the Centre sur l'Asie du Sud of Montreal; the Indian Farmers and Workers Support Group of Edmonton, of Vancouver and Winnipeg; and finally, the Geopolitical Economy Research Group. So I will now hand over to Daljit for his introduction. Then we will hear from Mr. Tikait, and his speech will be followed by a question and answer session. Thank you, Radhika, Professor Radhika Desai. सबसे पहले मैं आदरणीय श्री राकेश टिकैत जी का हमारे सभी संगठनों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय से I welcome Mr. Rakesh Tikait on behalf of all the organizations. Rakesh Tikait needs no introduction, but I'm lucky enough that I'll introduce him. He comes from a family who have spent ages in the service of farmers. He is son of Mahendra Singh Tikait, who was founder of Bharatiya Kisan Union. He passed his MA and LLB, which is a degree in law. और 90 के दौर में जब श्री महेंद्र सिंह टिकैत एक अच्छे और बड़े किसान नेता के रूप में देश में जाने जाते थे, तब 92 के आसपास एक बहुत बड़ी घटना घटती है जिसने राकेश टिकैत जी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो 92 में बिजली की दरों में वृद्धि के चलते श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी दिल्ली के लाल किले पे एक धरना दे रहे थे। तब श्री राकेश टिकैत जी दिल्ली पुलिस में थे, तो तब की सरकार ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया कि ये अपने पिता श्री महेंद्र सिंह टिकैत को धरना समाप्त करने के लिए मनाएं। किंतु श्री राकेश टिकैत जी ने उस वक्त दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से अपने जीवन को किसानों को समर्पित करते हुए आंदोलन में कूद पड़े। तब से लेकिन की मेहनत और लगन को देखते हुए इन्हें भारतीय किसान यूनियन BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। Rakesh Tikait joined police for some time and thereafter he resigned to work full time in the farmers union. So seeing his commitment, he was made president of the organization, which is working in Punjab, Haryana and Rajasthan. So he has been arrested by the police for more than 40 years. इवन हम ये भी कह सकते हैं कि इस आंदोलन को सफल बनाने में श्री टिकैत जी ने मुख्य भूमिका निभाई। So he has played important role in many farmers union. In the last movement, which farmers won recently, he played important role. So when the movement was being branded separatist, Khalistani, and very many other names were being called, and the media was against it, at that time,
Rakesh Tikat, इसको हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि पूरे का पूरा जो तंत्र था, सरकारी तंत्र था, वो बैकफुट पे चला गया। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर को घेरा गया, at that time Rakesh Tikat के द्वारा played important role, वहाँ पे हम देखते हैं राकेश टिकैत जी ने जिस and the Delhi police supported by the BJP goons were किसानों का साथ दिया, in very aggressive उस mode दौरान at that time. काफी लंबे समय से हिंदू मुस्लिम जाट सिख में बट गए थे। इन्होंने उन सबको दोबारा से किसान बनाया और एक मंच पे लेके आए। At that time, the farmers were divided का पूरा आंदोलन as Hindus and Muslims, and he played important role to unite them and organize them as farmers. करती है कि हम कानून वापस लेते हैं। तो आज हम श्री राकेश टिकैत जी को सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए So we are here to listen to Mr. Rakesh Tikat. मैं श्री राकेश टिकैत जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएं। So I'll invite Mr. Rakesh Tikat with a couplet from तो उनके बुलंद हौसलों को देखते the poet Pash. करना चाहूंगा छोटी सी। हम लड़ेंगे साथी जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत है बाकी, जब तक बंदूक ना हुई तब तलवार होगी। So we will fight as long as there is need to fight. We'll fight. We'll fight if we don't have swords. We will keep on fighting as we can gain nothing without fighting. राकेश टिकैत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। आपका ठीक है, अभी आवाज आ रही? जी तो राकेश जी बोलिए। साथियों का धन्यवाद, सभी को नमस्कार। I thank everybody. आज जो ये पूरा प्रोग्राम सभी साथी इसको कर रहे हैं, This program कई इशू इसमें रहे हैं, खास करके इस आंदोलन के बारे is में। about multiple issues about the मूवमेंट farmers' protest, as this kind of murmur protest. वो एक चाहते थे कि इस तरह का मूवमेंट एक बने देश में, जिसमें पूरे देश Mahendra का Singh इकट्ठा हो। Tikat always expired for this kind of movement. साउथ के किसान आए, But most of the time, अभी नॉर्थ के किसान आए तो साउथ के नहीं आए। farmers either came from the South India or from the North India. पंजाब का एक जत्थेबंदी आई, लेकिन अब की At times, one organization from Haryana came to Delhi, and at कहते थे कि times, an organization from Punjab came. एक लड़ने वाली But Mahendra Tikat used to say आंदोलन के लोग हैं, that Punjabis are a community of warriors. आएगा तो उत्तर प्रदेश आएगा। So if Punjab will come, then Haryana will join. और खास And करके then Uttar Pradesh and Rajasthan will join. He used to talk about that these four states around Delhi, दिल्ली पे हम प्रेशर बना सकते हैं। राकेश they साहब, can आपकी आवाज थोड़ी स्क्रैची हो रही है। माइक्रोफोन को जरा ऊपर रखिए, हाँ, और शायद हिलने न दीजिए। हाँ, Radhika ji, I'm just checking. Is my voice okay? हमेशा ये चाहते थे पूर्ण रूप से, और अल्टीमेटली एक आंदोलन शुरू हुआ। So Mahendra Tikat always aspired that there should be unity, लोग आए उस आंदोलन में, और वो so that people from all around Delhi could encircle Delhi. और क्योंकि एक दिक्कत भी हुई थी, हम दिल्ली में आए, अलग अलग टाइम पे आए, इशू So most of the time there was issue that we used to come to Delhi at different times. Somebody will come at some point of time and someone else will come 2 months thereafter. प्रोग्राम सेट हुआ, प्रोग्राम सेट करने के बाद में सब लोग आए, और ये हुआ कि हम पूर्ण रूप से आंदोलन इकट्ठा करेंगे। कोई भी But this जैसे time people came, पूरा देश का किसान संगठन, मजदूर, this time people came with the definite program. जो बहुत बेरोजगार इस देश में हैं, वो सब इकट्ठा हुआ। So the people from all over India, whether they were बाजार में काम करते हैं, रेडी whether they were पटरी, youth, unemployed or daily wagers, देश में आपको
or people from different parts of the world, they came to Punjab. So the main agenda was disinvestment and selling the public sector, including agriculture. So there was claim that the new farm laws will increase the income of farmers. Whereas our understanding was that the people living in rural area will not get any benefit, but they will be at the loss. So it will be for the benefit of big companies like McDonald's and KFC. हमने उनसे डाटा कलेक्ट करा और हमने एक ही क्वेश्चन उनसे करा कि जो आपका बचा हुआ भोजन है, We collected data from all the companies and questioned. कहाँ जाता है आपका? तो उन कंपनियों का ये है कि बचा हुआ भोजन हम अपने जो वहां पे वर्कर्स होते हैं उनको भी वो नहीं देते क्योंकि उसका बिलिंग नहीं होता, तो उसको कैमरे के सामने डस्टबिन में उसको डाला जाता है। तो जो कंपनी अपने वर्कर को भी जो बचा हुआ उनका भोजन है क्लोजिंग के टाइम पे वो नहीं दे सकती, तो इसका मतलब ये है कि फूड की We analyzed that companies like McDonald's and KFC were not in a capacity to give the food they offer to consumers to their own workers in the evening. So with these three laws, the government was going in that direction. So, and the companies were going to decide the remuneration, the prices of the agriculture produce. So we mobilized people around this. So there was one voice that these laws should be repealed, otherwise we will not go back. Social media helped us in big way. There were big media houses who opposing us. The youth was with us. That helped us in big way. So we sacrificed more than 750 people during this struggle. We suffered a lot of economic losses. So there were blames put against us. Khalistani, Pakistani. But we were sure that whatever we are called, whether they call us Khalistani or Pakistani, so there were instances like the incident on 26th January, but the country stood by us. भारत सरकार को हमने बार-बार कहा कि किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर किसी We reminded Indian government again and again that it is not a political party which is ruling the center. It's the government of India, and the government of India should talk to people. Whereas you are representing a company, so we are fighting against a government which belongs to companies. और हम ये चाहते हैं कि हमने अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अभी उसमें भाव और वो नहीं मिले हमें, एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, वो नहीं। So through that strength we won, and but this movement is yet to achieve the main target. We are still to get the minimum support price as legal guarantee. So if the government doesn't meet our demands, then we will struggle again. So there are issues like milk agreement with the foreign countries.
उसका सवाल हो, एफटीए का सवाल हो, there are other agreements, ये कहा है कि किसान को नुकसान है, foreign direct investment. बेचता है तो उसको नुकसान है। स्वामीनाथन की एक कमेटी की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट लागू So we have talked about the losses that farmers suffer when they sell the agriculture produce at lower prices. So there is Swaminathan Commission report. एक आधारभूत हम मानते हैं उस टाइम पे किस चीज के क्या भाव थे। पहली बार देश में वीट पे सरकार ने लेवी लगाई और 76 रुपया पर क्विंटल उसका भाव रखा भारत सरकार ने, इंडियन So गवर्नमेंट। we consider that base prices should be fixed and thereafter rest can be fixed. So we analyze that when the wheat price was 78 rupees per quintal, वीट नहीं खरीद सकते थे। so at that time people were not in a capacity to purchase wheat. 30 रुपये में 1000 आती थी, तो 1 क्विंटल So वीट। if we compare the prices of wheat with bricks, so at that time we could buy bricks that was 2,500 at the price of wheat per quintal. केजी 3 So क्विंटल। similarly, there are comparable prices of different items, whether it is wheat or it is gold. So the prices have not increased of the agriculture produce, whereas the rest of the prices are increasing. हमने कहा कि वो नहीं कर सकते तो हमारे बच्चों को एजुकेशन साफ फ्री दे दो। So our argument was that if you can't match the agriculture price with price index, then make the education of our children free. So if there would have been a good agriculture policy, the people from villages wouldn't have migrated to the urban spaces. एजुकेटेड पर्सन से गांव से उसने The भी most educated people of the village are leaving village as the policies towards villages are not good. So people are leaving village. So uneducated labor is leaving the village. संयुक्त मोर्चा, अब वहां पर बात हम कर लेते हैं कि संयुक्त मोर्चे का क्या अस्तित्व है। संयुक्त मोर्चे में 500 से ज्यादा The United Farms Front और नए साथी पूरे देश भर से जुड़ेंगे इसमें और have mobilized people from all over India, and it is still strong, and it will mobilize people from all over India. This is an organization of workers and peasants from all over India. So लड़ाई लाठी से so they will लड़ाई का मतलब है कि किसी भी के भी खिलाफ आप अगेंस्ट प्रोग्राम करो तो लड़ाई तो एक नाम होता है, जैसे यहाँ पे भी कहा तो संघर्ष। So by struggle we don't mean that we are fighting against the government. It's a name that if you are raising a voice, it is called struggle. So it is struggle. So last year the government stopped talking to us after January 22. So thereafter हमने उनका थैंक्स कहा कि आपने the government withdrew or repealed the laws in November. But our problem is yet not solved. So they have sought time from us, as there are other pending demands like minimum support price. So there is a demand for the compensation for the people who
lost their lives during the protest. And then there were cases filed against many of the activists. They are yet to be withdrawn. So we have the confidence of the people. वो गैप खत्म हुआ, हमने एक दूसरे की भाषाओं का आदान प्रदान किया. So during this struggle, we have learned each other's languages. So we have spent time with each other, and we understand each other's the sensitivities. So the youth got connected with the movement. In the coming days, we think that the movement will go to new peaks, and it will play the role of opposition in the democratic setup. The United Farmers Front is not a political front. So we are reaching out to the masses. So whatever our program will be, we will be announcing it in the coming days. So we have seen that people outside the country supported us. They organized tractor marches in foreign countries. So they supported us. They stood by us. We thank them. Whichever country or from wherever people supported us, we support them. So whenever there was call from our side, they organized solidarity events in our support. So I thank them all. हमारे पास अभी बहुत ही कुछ यानी सवाल तो आ ही गए हैं, और तो मैं एक के बाद एक आपके सवाल आपके सामने रखूंगी. तो पहला है, देव चीमा पूछते हैं, in which specific way the NRI support helped the movement? यानी कि जो देश के बाहर नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, NRI जो हैं, उन लोगों ने आपका समर्थन किस तरह से किया था? वैचारिक रूप से वे हमेशा चिंतित रहते थे कि और non-resident Indians helped us ideologically. They remained committed to us. Many people joined us there. उनका इतना ही रहता है, हमने उनको बार-बार ये कहा कि आप जिस भी कंट्री में हैं उसके कानूनों को So they keep on reiterating their support. आप हमारी चिंता ना करें. तो वैचारिक रूप से पूर्ण रूप से हमारे साथ में रहे. So they were ideologically supporting us. बहुत अच्छा, धन्यवाद. दूसरा क्वेश्चन देव चीमा पूछते हैं कि what is the effect of farmers leaders such as Rajewal, Ruldu Singh jumping into the elections arena on the SKM movement and the objective? Has it weakened the movement in some ways? So यानी कि जो farmers किसान नेता जो हैं जैसे कि राजेवाल, रुल्दू सिंह, वो इलेक्शंस में आ गए हैं, तो इसका असर क्या है संयुक्त किसान मोर्चा पे, किसान आंदोलन पे? वो इसको यानी कम मजबूत किया है या क्या हुआ है इसके वजह से? नहीं, इसमें ये है कि कुछ लोग इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो संयुक्त मोर्चा इलेक्शन. Some of us want to fight election. They are not fighting election as United Farmers Front. They are fighting it indirectly as they wanted to. So there are 22 organizations. So there are a couple of organizations which are contesting elections. So we are not supporting them, and we will not be part of their election campaign. So it is not the United Farmers Front. अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं, तो आप आगे जाते हुए क्या यानी कि आप क्या प्लान कर रहे हैं? आप क्या करेंगे? सिर्फ आंदोलन करेंगे? If you don't want to contest elections, then how will you
बहुत ही अच्छे struggle on the issues like इतने आसान नहीं है। minimum support price and तो public आपकी distribution क्या system. सोच है इसके बारे में? देखिए, देश में मूवमेंट अगर ठीक रहेगा, हमेशा If there is या दुनिया में a movement in the country, ही चाहिए, as movement कहने के is important, और इससे ये हुआ and if there is movement to raise the demands, और बहुत लोग कहते हैं कि आंदोलन से क्या होगा, आंदोलन से many people say that what will movement serve? कहने की हमने ताकत आम जनता को दे दी, जैसे वोट का अधिकार So the movement give people strength to raise their voices, अपनी भाषा में आदमी कह सकता है, that too in their own language. ज्यादा बड़ा अधिकार है। That's a huge and important right that people have. हाउस जो बड़े हाउस है, लोकसभा और Both the houses of parliament, whether it is राज्यसभा, Lok Sabha or उसमें Rajya Sabha, दोनों कानून वापसी हुए, एक ये बड़ा इशू है। so they repealed the laws in the same day. So that happened because of the movement. और उसके बाद हम करेंगे, वो तो So we will not go that we will make government and then we will ये हुआ, make the law, make the laws. So we will do the movement, and the movement should remain strong in the country. कार्ल मार्क्स के जो फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंगल्स, उन्होंने कहा था कि आंदोलन करना हमारी सिर्फ एक अधिकार है, बाकी सब अधिकार तो जो सरकार देती है वो है, लेकिन हमारा जो ऐतिहासिक अधिकार है वो आंदोलन करना है। Karl Marx' friend Frederick Engels said, सवाल ये है, मिनल पूछती है कि आपको कोस्ट सेलिश टेरिटरी, यानी कि यहाँ एक इलाका है जहाँ सेलिश कोस्ट सेलिश लोग रहते हैं, वहां से बोल रही है, आपको बताती है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर लीडरशिप एंड योर टॉक, आपके नेतृत्व और आपकी बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब। माय क्वेश्चन is the specter of president's rule that has been raised recently, do you think they will dismiss the elected government, and if so, what will be the future of the Samyukta Morcha under such a scenario? यानी कि president's rule अगर जो लाया जाए और कोई भी elected government को dismiss किया जाए, तो उसमें आपका क्या रोल होगा, उसमें आपको क्या होगा, आपको क्या यानी हींच पहुंचेगी? नहीं, वो तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट के रूल क्या है, वो संविधान है देश में। अगर that is the government's role, and then there is constitution in the country. Whosoever has the majority will form the government. We are not bothered about the government, who forms the government. So our concern is that how will the government serve the common people? उसमें आता है तो कानून है, संविधान है, उसके तहत आएगा, हम उस सिस्टम में जाएंगे। So if there will be president rule, it will come according to the constitution or according to the law. उसमें नहीं हम जाएंगे, हमारा है So that is a struggle between the ruling and the opposition party, and United Farmers Front will not intervene in that kind of struggle. सवाल ये है, राणा बोस पूछते हैं, is there a single social media based daily news bulletin representing all the unions, and if there is, can someone supply the link? तो ये तो बहुत factual question है कि अगर आपने यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कोई एक डेली न्यूज बुलेटिन की प्लेटफॉर्म बनाया था, और अगर वो है तो कोई लिंक सप्लाई कीजिए। वो हम दे देंगे, आप वाले इस पे हम लिंक कर देंगे। अच्छा, we will share the link. वो बने हैं और संयुक्त मोर्चा की भी एक जो प्रेस, So there were multiple channels. बने हैं तो हम बिल्कुल शेयर कर देंगे आप वाले इस पे। So we'll share the links with you. ठीक है, हाँ, अगर चैट में अगर ला और सिर्फ नाम भी तो अगर नाम भी सिर्फ आप बता दें तो हम भी ढूंढ सकते हैं। नहीं, हम डाल देंगे, और कई हैं जो अपने फार्मर्स मूवमेंट के साथ। So there are many channels who were supporting the farmers struggle. मतलब काफी लोग लिबरल से रहे हैं, कुछ So there were people who were liberal, and there were channels who were supporting us. वो चलते
So we had our own ठीक है. United Farmers Fronts channels. How would Vinod Mumbai पूछते हैं, how will the forthcoming elections in various states affect the future of the farmers movement? यानी कि 2022 में बहुत सारे विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसमें संयुक्त यानी आपके आंदोलन को इन इलेक्शन का आपके आंदोलन पे क्या असर होगा? नहीं, आंदोलन तो अभी नहीं है क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस यहाँ पे हैं और अभी Due to COVID's guidelines, there is no movement right now. तो अभी मार्च तक तो मूवमेंट ज्यादा नहीं है और So there is no such movement till March. मूवमेंट चला है, जनता तो दुखी है पूर्ण रूप से, तो शायद इस पार्टी को लोग कल कम वोटिंग करेंगे, तो ये So जरूर people रहेगा। may vote less to the ruling party. भी अपना काम कर रहे हैं। And then there are people from the United Farmers Front who are working in their own ways. इलेक्शन का टाइम है तो लोग आप अपने तरीके से So this is election time, so people are involved in that. And we have nothing to do with it. पूछते हैं, थोड़ा सा लंबा सा सवाल है. One of the key aspects of the farmer struggle was the opposition to central intrusion in agriculture. यानी कि आपके आंदोलन में एक बहुत सेंट्रल मुद्दा ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप एग्रीकल्चर यानी स्टेट सब्जेक्ट में वो दाखला करती है. It is important to understand the contradictory role of MSP in this context. तो इस context में minimum support price का बहुत contradictory यानी भाव रहा है. While it has been the central demand of the farmers movement for MSP to give a reasonable income to farmers, it should be fought for. But the danger of handing power of setting the MSP for all crops to the center will further entrench centralization. यानी कि अगर MSP आप center को MSP को set करने का हक आप center को दे तो वो यानी कि power ज़्यादा centralize हो जाएगा. So it should be viewed as a temporarily needed demand, but in the long run, the demand should be to give powers of setting and implementing MSP to the state level, because each state government knows and understands best what crops are most suitable, etc. यानी कि ये यानी temporarily ये अच्छा demand है, लेकिन आगे जाते हुए हर स्टेट गवर्नमेंट को एमएसपी को सेट करने का हक देना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अच्छी तरह समझती है कि स्टेट का क्या उस स्टेट में एग्रीकल्चर का क्या हाल है वगैरह वगैरह. देखो इसको बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, See, जो कानून जो लॉज बनाएगा बनाएगा और the central government will make the laws which will be implemented by the state governments. The central government need to make the laws. So there are 23 crops. और So जो दूरगामी वो आएगा वो पूर्ण रूप से आएगा, that vegetables should also come in the ambit of that law. जनता को देना पड़ेगा उसमें चाहिए इलेक्ट्रिक. So in the long run, पेस्टिसाइड फ्री की बात है, किसान को उनके this law should be there. या उनको मेडिकल हेल्थ, And then there are issues like free education and medical facilities. And then there is need of employment for the rural people. Whereas the government is curtailing the employment opportunities, and unemployment is a big issue now. तो अगला सवाल है, राधा डिसूजा पूछती है कि if Hindutva forces attack Muslims, what will members of SKM do in practical terms? Will they intervene to stop the attacks if they are unrelated to farmers' issues? तो अगर हिंदुत्व की यानी जो forces जो हैं वो मुसलमानों पर हमला करें, तो SKM क्या करेगी practically? वो intervene करेंगी या कहेंगी कि जब मुद्दा जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ नहीं हो. अभी इस तरह की हालात देश में अब नहीं है. हम There is no such situation in the country. बात करते हैं और हम बताते हैं कि ये इलेक्शंस का इशू है और कुछ पार्टी का. We tell people that these are electoral issues and these are agenda of a political party. And the people of the country want
development, employment, the communal formula of the party or the government has failed completely. So we make people aware about this, that they should come out of the communal politics, and people understand it. अच्छा, अगले दो सवाल जो है मैं जोड़ के पूछूंगी क्योंकि ये कनेक्टेड है। पहला सवाल है साचा इस्माइल का, वो है एक सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, लंदन से बोल रहे हैं। आपको धन्यवाद देते हैं और आपके साथ समर्थन करते हैं और पूछते हैं कि आपने देखा है कि आपने यानी उन्होंने देखा है कि आपने गवर्नमेंट ओन बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के खिलाफ भी आपने आंदोलन के लिए बुलावा किया है। तो इसके बारे में आप कुछ बोल सकेंगे और आपका एटीट्यूड कैपिटलिज्म के खिलाफ के द्वारा क्या है, और एक ऑल्टरनेटिव। So you have opposed the privatization of banks, and what's your opinion about the capitalism? कि कॉन्क्रीटली आप क्या स्टेप्स लेंगे किसानों और मजदूरों के साथ कोऑपरेशन और यूनिटी What बनाने? concrete steps do you plan? Firstly, the big companies come and the unemployment increases. So they will hire laborers, and similarly, there will be big companies in the banking sector. So similarly, companies will plan to snatch lands from us. The big companies will work in their own ways. So that will be huge loss. We are against big companies. We see that in Brazil, there are few companies who own most of the land. हम उनकी जमीन छीन के लोगों को बांटने का काम करते हैं, तो देश को मजदूर नहीं बनने देना हमको प्रॉपर्टी तो बचनी चाहिए। वो एक जगह एक के हाथ में पूरी चीजें नहीं आवे कि बड़ी इंडस्ट्रीज को एक ही लगाएगा। We don't want pauperization to happen in the country. We want people to have their own means of employment. So if the economy is open to the big companies, we are against that. It is important for farmers as well as workers. So without farmers, workers can't survive. So if there will be big companies in the milk production center or in the dairy sector, so it will displace all those people who survive on dairy. So the big companies will bring milk from outside, which will displace most of the people working in the dairy sector. हम जूसेस का इस्तेमाल करें, मिल्क का इस्तेमाल करें, तो बहुत पैसा हमारा बच सकता है। लेकिन किस तरह के केमिकल वे डालते हैं कि लोग उसकी तरफ, पेय पदार्थ की तरफ, उसकी तरफ जाते हैं। तो ऐसे ही है जो बड़ी कंपनी फूड चेन में आ रही है, हम पूर्ण रूप से उनका। So the big companies are coming in the food chain. The survival of farmers and workers depend on that the big companies don't come in the economy. कॉर्पोरेशंस आए हैं उसके खिलाफ किसान, मजदूर और छोटी संपत्ति वाले लोग भी उनके खिलाफ आ गए हैं, क्योंकि उनको यानी उनका लाभ नहीं होता है इसमें। तो ये एक
फॉलो अप में क्वेश्चन पूछती हूँ, इसके पीछे एक और सवाल पूछती हूँ कि भारत में भी बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेशन है, यानी अडानी और अंबानी और वगैरह वगैरह, तो उसमें ये बड़े कॉरपोरेशन और फॉरेन बड़े कॉरपोरेशन में कोई आप यानी डिस्टिंक्शन करते हैं? Do you see any distinction between foreign and local corporations? रिलायंस वाले, No, there is no distinction. The Jio phone came and initially they gave it free of cost, and over the period of time they increased the prices, the rates. Earlier we had a government sector telephone company, that is VSNL. Over the period of time, the government sector has been disbanded. तो पब्लिक सेक्टर के लिए काम करेगी, पब्लिक के लिए काम करेगी, उसका So बेनिफिट there should be government companies which should be working for the public welfare, which will give jobs to the people, whereas the private company will work to maximize the profit. जो धन को अर्जित करने वाली कंपनियां हैं, हम उनके पूर्ण So रूप in से that sense, whether they are foreign or local companies, अगला सवाल, Dave, following Dave Chima's question, what kind of support from the diaspora is useful for the movement? ये दीदिति मित्रा पूछती है. If Tiketji could tell us what kind of support is needed, what kind is useful, because those in the diaspora often do not get the full extent of the issues on the ground. At the same time, it's a privilege to being to speak and act due to location. कि ये पूछती है कि जो बाहर NRI लोग हैं, जो डायस्पोरा में है भारत के लोग, तो वो आपकी समर्थन में क्या कर सकते हैं? अगर आप कुछ हमें डिटेल में बताएं, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन कभी कभी हम समझते नहीं है पूरी तरह से, जैसे कि आप वहां भारत में बैठे हुए समझ सकते हैं. तो अगर आप हमें कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा. हम ये चाहते हैं कि जो लोग बाहर के हैं वो सिर्फ ध्यान रखें, we want उतना ही ठीक है. यहाँ पे फाइनेंशियल की जरूरत, हमको हेल्प की जरूरत नहीं है. हमारे कम So, उसमें हम अपना the people from abroad can help us ideologically, so their support is required. We don't need resources from there. एक्टिव है, माहिर हैं. We are active and expert in talking to a government, so we are quite equipped. So the people outside the country are keeping a watch and they are monitoring it. So that way, this movement is a movement of the world. So our organization is working all over the world. So we work in Europe and we work in other countries. So we work on Food Security Act. Wherever big corporations acquire lands, we work there, whether it is Brazil. So we want that there should be united farmers struggle everywhere. So we want people to fight against chemical foods. So we want an egalitarian world. So हमें याद दिला रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा और BKU वगैरह बहुत सारे किसानों के ऑर्गेनाइजेशंस जो है भारत में, वो विया कैंपसिना के भी मेंबर्स हैं, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम विया कैंपसिना है, वो किसानों का ऑर्गेनाइजेशन है. सो जस्ट रिमाइंडिंग एवरीबॉडी दैट BKU and many other organizations in India belong to विया कैंपसिना. ओके, अगला सवाल. तो MSP के फाइट में अगले यानी स्टेप्स क्या होंगे, अगले कदम क्या होंगे? अभी भारत सरकार ने एक कमेटी बनाने की बात की है.
Now the government talks about formation of a committee. So there will be people from different organizations. हम एमएसपी पे भारत सरकार एक कमेटी बनाने की उन्होंने बात की है, तो The कमेटी के government माध्यम से talk about formation of a committee about minimum support price. So we will make our presentation there. देखना है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन अभी 2 महीने के लिए इलेक्शन में सब लोग चले जाएंगे, तो So now the people will be involved in elections for next 2 months. उसमें हम पूर्ण रूप से डिसाइड ये करेंगे कि कब हमारी मीटिंग होगी, So there will be meeting of लेंगे, United Farmers Front. So we'll decide accordingly. अगले बहुत सारे सवाल हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको एक इकट्ठे करके आपके सामने रखती हूँ कि पहली बात तो ये है कि एसकेएम बीजेपी के खिलाफ क्या कैंपेन करेगी इलेक्शन में, इसके साथ Whether जुड़ा हुआ सवाल है कि United Farmers Front campaign against the BJP in the upcoming elections. मुसलमानों को ऑलरेडी अटैक करते हैं, तो एसकेएम इसके बारे में क्या करेगा। राम मूर्ति पूछते हैं, उन्होंने हिंदी में ही लिखा है लेकिन अंग्रेजी स्क्रिप्ट में, क्या आप नहीं सोचते What will United Peasants Front do in case Hindutva forces attack Muslims in Uttar Pradesh? I think I got that right. तो ये एक और सवाल है। अच्छा हाँ, तो इतने सवाल आपके सामने में पहले रखती हूँ, फिर बाद में दूसरे सवालों पे जाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम वाला जहां तक सवाल है, अभी हिंदू मुस्लिम की भी बात आई, क्रिश्चियंस और हिंदू की भी बात आई, तो इससे देश की इमेज बहुत इंटरनेशनल मार्केट में खराब हुई। As far as the communal divide between Hindus and Muslims, and there is a discussion about Hindus and Christians, this defames our country. So if there is any such issue, we will oppose it at every extent. So we don't expect that there will be a big movement against Muslims here. So there may be references in speeches. रियल में नहीं है, और This is not real issue. वो 15 तारीख में हम एसकेएम की मीटिंग होगी, उसमें हम So डिसाइड we करेंगे have कि a meeting of United Farmers Front on 15th of January. Thereafter, we will decide whether we want to oppose BJP or not. अगले जो सवाल है वो क्लास से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक सवाल है जो सुधीर कुमार पूछते हैं कि भारत में 85% जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके पास वो लैंडलेस हैं, तो इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद भी ये सिचुएशन है, ये हालात हैं, तो आप क्या करेंगे इसके बारे में, और क्या 75% of the farmers are landless. What will you do for them? सब किसान प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं, जमीन है, बहुत लोगों के पास में जमीनें हैं, और जो छोटी Many people have land. होती जा रही है, बहुत लोग जमीन अपने उससे बेच के शहरों की तरफ प्लान करते हैं, So many people are selling lands and moving towards cities. वो जमीन अपनी बेच देते हैं, They feel that rural areas are not good enough for future. उनको अलाट कर दिया है, बहुत पहले तक ये चीजें होती रही, और आज भी है। Earlier, government used to allot lands to poor or the landless. गवर्नमेंट कर देती है, इस तरह की पॉलिसी देश में अभी है। So there are policies in the government. तो क्यों देगा जमीन, और यहाँ So if somebody has bought the land, they will not जमीन लोग खरीदते हैं, एक फीट give the land. So the people buy land according to the Sealing Act. धीरे-धीरे जमीन तो बढ़ती है बहुत स्पीड से, So over the period of time, the land is shrinking. The land holdings are shrinking. दो खेत में रहेगी गांव में, एक बाहर नौकरी कर लिया, एक ना कुछ वैसा बिजनेस कर लिया, तो In बहुत rural areas, if you are गांव में है, 3 brothers, so there will be 2 living in the village and the third will go out in search of employment. बहुत
So that is happening. आगे दो तीन सवाल हैं। एक तो सवाल था जो मैं भूल गई पूछना कि जो वो जो किसान का जो मर्डर हुआ था जो वैन में लखीमपुर में, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? अभी तो कोई यानी जो मुजरिम हैं तो वो कानून के। So there were some farmers who were trampled under the van. So what happened to that case in Lakhimpuri? So there are people who are under arrest. So charges have been filed against them. So one of the accused is Ajay Taini, whose father is a union minister, and he is still minister. We demand that he should be suspended. Ashish Taini is in jail along with others. Charges have been framed against them. अच्छा, अभी मुझे कहना चाहिए कि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, तो आप अगर बहुत थक जाए तो हमें बता देना, लेकिन मैं आपको पूछती रहूंगी एक के बाद एक। आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। धन्यवाद। तो इसमें पहले तो था प्रीतम सिंह का, कहाँ गया? हाँ, तो प्रीतम सिंह फिर से पूछते हैं कि अगर आप ये नहीं मानते कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन को पंजाब इलेक्शन में लड़ना चाहिए, तो क्या आप ये तो कह सकते कि आप उनको पब्लिकली अपोज नहीं करेंगे? नहीं, हम ना उनको हम अपोज करेंगे और ना So we will not oppose the farmers leaders who are contesting the elections. We don't plan to support or oppose them. We consider that vote is a democratic right. It's their constitutional right. Anybody can contest and anybody can vote. So it's their right and they are using their right. राकेश जी के पूछते हैं, टिकैत जी आपकी बहुत बड़ाई हो, आप या क्या समझते हैं कि कोई इंटरनेशनल फार्मर्स का कोई अंतरराष्ट्रीय फोरम बनाया जाए, मोर्चा बनाया जाए, और अगर आप जो ये करने वाले हैं, अगर ये इसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपकी सोच क्या है, आपकी वजह क्या है, और आप क्या इसमें नेतृत्व लेंगे या नहीं? नहीं, हमारा तो जो है लाविया कैंपेसिना है, हमारा इंटरनेशनल फॉर्म है, और हम उसमें So we have an international forum which is working for last more than 20 years. So I'm quite active in that and it works all over the world. It works on the issues of milk, environment, and on the issues of youth. We change our leadership every 4 years. It's an international forum and we work under that organization. All the people working in that, all the organizations working in that organization are in leadership capacity. As in the United Farmers Front, there are more than 40 organizations and all of them are leaders. धन्यवाद। अच्छा, तो अमीन अमितोष पूछते हैं, one fault line that Hindutva forces exploit is the issue of cow slaughter in order to communalize agrarian populations against minorities, especially Muslims. What is Rakesh's stance on this issue, especially given the fact that his organization has a mass base in Uttar Pradesh, where cow vigilantism has led to lynchings of Muslims? तो आप तो समझते हैं कि हिंदुत्व फोर्सेस ये cow slaughter यानी कि क्या कहते हैं उसको, गौ रक्षा की बहुत यानी वो करते हैं, और इस इश्यू को लेकर मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही वो नफरत पैदा करते हैं। तो यूपी में ये बहुत ही यानी प्रभाव रखता है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन यूपी का है, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? नहीं, हमारा तो पूरा देश भर में ऑर्गेनाइजेशन है। Our organization is pan-Indian.
गाय की पूजा करता है। तो वो चैप्टर अब है ही नहीं कि यहाँ पे We have law in the country and Hindus worship cows. यूपी स्टेट में ही नहीं कहीं पे भी We don't have cow slaughterhouses in Uttar Pradesh. विरोध करते हैं क्योंकि So if someone kills a cow, people oppose it as it is against their religious feelings. वो करता है तो उसके लिए एक कानून है और कानून अपना काम करता है। If somebody does anything like that, then there is law to take care of them. MSP का जो लेजिस्लेशन होगा शायद कमेटी बनाई जाएगी, तो ये क्या कोई टाइम लिमिटेड होगी या परपेचुइटी में, यानी कि वो चलती ही जाएगी आगे आगे जाते हुए? नहीं, ये टाइम लिमिटेड इसका होगा। हम अपनी तरफ से कि The committee will be a time bound committee. महीने का कोई इसमें टाइम रखा जाए। So we will टाइम लिमिटेड होना चाहिए इसमें। consider that there should be a time limit, 6 months or 8 months. Paulius Edikukas का आपकी राय में फार्मर्स प्रोटेस्ट को वेस्टर्न यानी मीडिया में BBC, CNN वगैरह उसमें अच्छी तरह से कवरेज मिला है या नहीं मिला है? नहीं, बाहर के चैनलों पर मिला है कवरेज। Our protest was covered by the foreign channels, whether it was BBC or whatever channel. There were some Indian channels which were covering it. So there were channels which were portraying the protest negatively. कुछ चैनल ऐसे थे कि वो बिल्कुल नेगेटिव दिखाते थे और बहुत चैनल Some उनके ऑफिस हैं, उन चैनलों की दीवार से दीवार मिल रही, वो पॉजिटिव दिखाते थे, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी थे। So there were channels working from building adjacent to each other, and they were reporting it onto जो मोदी साहब की in altogether different directions. और ये सब कॉन्स्पिरेसी के बारे में जो बात चल रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारा यह है कि उनका वो इंटरनल मामला है, वहाँ की That's their internal matter. That is the Punjab government and the BJP government in the center. So there was movement all over Punjab. आएंगे और हम उसको रोड रोकनी है। There was no expectation that PM was coming by road. और वहाँ पर लोग रास्ते में थे, तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर होगी कि हम उनके रास्ते में नहीं। It was spontaneous decision to come by road, and there were people already on the roads protesting against him. रास्ते में आए, तो अगर ये होता कि उनका So that way the PM came in our way. We were not in her way. That issue is between the center and the state government. The way SKM advocated voting against BJP in West Bengal without supporting any party, it is possible to follow the same policy in the upcoming elections in UP and Punjab. Your policy in West Bengal was very admirable in defeating BJP. Can you repeat it in other states? तो वो आपको याद दिला रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने वेस्ट बंगाल के चुनाव में कहा था कि आप बीजेपी के खिलाफ वोट कीजिए, लेकिन हम किसी और पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ आपको वोट करने की अर्ज कर रहे हैं। तो क्या आप ये यूपी और पंजाब में भी कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये बहुत ही कामयाब रहा है ये स्ट्रेटजी? तो आप क्या उस टाइम पे उनके साथ at that time the movement was in full swing at the time of Bengal election. On 15th of January, we will decide whether we will go directly against them or indirectly we will do a campaign and support none. So we had an agreement with the government. So it depends. आखिरी 2-3 सवाल हैं तो मैं पूछती हूँ। तो हीरा सिंह पूछते हैं कि अगर आप इलेक्शन के राजनीति में रणनीति में में भाग न लेंगे और मौजूदा सरकार if you will not contest the elections फिर वही कानून लागू करना and the चाहिए, government तो आप क्या करेंगे?
brings back the similar laws, then what will you do? So we were not protesting on the hired tractors. We have our tractors, so we will do the movement again. उसकी डेट नहीं थी कब होगा, लेकिन होगा. So we will do the protest again. अच्छा, तो आखिरी एक दो सवाल जो हैं ये मैं एक इकट्ठे करके ही पूछती हूँ. तो एक तो सवाल है कि does SKM have any plan to program to educate, train youth to take future leadership, कि आप युवा को एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे आगे जाके नेतृत्व लेने के लिए. दूसरा सवाल था How will SKM train new leaders? कि आपकी जो जीत हुई नवंबर में, उसके बाद और ग्रुप भी बनाए गए हैं, तो उनको आप अपने साथ लेकर चलेंगे या नहीं. एक और क्वेश्चन आया है साचा इस्माइल से, यूके से. I have read, may have misunderstood that you were until relatively recently more supportive of BJP. That really surprised me. If this is true, could you explain your thinking? And if it's not true, please, sorry if I have misunderstood. तो इन्होंने पढ़ा है कि आप पहले बीजेपी का समर्थन करते थे और अभी नहीं करते हैं, तो उसके बारे में आप अगर ये सच है तो उसके बारे में आप कुछ बोलिए, और अगर नहीं सच है तो उनको माफ कीजिए. और फिर मेरा एक सवाल है कि आप अंतिम में कुछ कहें कि आप 15 जनवरी को क्या प्रश्नों के बारे में आप बात करने वाले हैं और क्या डिसीजंस लेने वाले हैं, और आगे चल के आपका क्या ख्याल है कि आपका आंदोलन किस तरह जाएगा, क्या करेगा वगैरह. पहले तो यूथ का है कि यूथ को बहुत इस आंदोलन से सीखने को मिला है, और हमेशा youth has learnt a lot from the movement, so they should come forward and learn from it. बढ़ाने की कोशिश करते हैं. Whosoever is capable will grow in the leadership. बच्चे जो 4 साल के, उनको भी बहुत ज्ञान हुआ, वो भी आंदोलन के पक्ष में बात करते हैं, वो YouTube पर उस पर देखते The participants have learnt a lot from the movement. Youth have learnt a lot. They understood that we can lose our lands. So they stood against it. United Farmers Front will keep on working on its agenda. So on 15th of January, we will take stock of it. What are the positives and what are the negatives? What are the losses and what are the gains? So we will take many decisions in that. हमने नहीं किया पूर्ण रूप से. मैंने वोट दी थी अकेले ने, मेरी वाइफ ने किसी दूसरे को वोट दी थी. वो हालात और वो कुछ बहुत सी चीजें. We have not supported BJP collectively. I voted them individually. My wife voted for another party. क्योंकि वोट देने का अधिकार सबको है. वोट सब So लोग. we have a right to vote. So we vote. लेकिन हमने अपना वोट बता दिया था, और हम तो कहते हैं So कि I publicly told that I voted for BJP. लेकिन वापसी लेने का, वोट वापसी लेने का अधिकार और कानून देश और दुनिया में है नहीं. तो कह रहा है कि मैंने वोट किया, मेरा. So there is no law in the world where one can withdraw the vote. Polled. So now there are people who are upset with the BJP. They'll get their votes back if there is such law. It is in the store of the future who will vote whom. So there are people who are upset with the BJP. They are upset because there is unemployment. So there are people who are uneducated. So they are not in a position to take education. So there is a conspiracy against the country to convert the whole country into a labor colony of the corporations. We should have produced capable engineers
So on the other hand, the government is trying to make it a labor colony. So if the government is going in that direction, नए सवाल आए हैं तो मैं पूछ लेती हूँ, आप हैं यहाँ हाँ, और पूछो। एक छोटा है, एक शायद लंबा है। तो आपके यूपी के बारे में क्या प्रेडिक्शन है, आप क्या सोचते हैं क्या होगा यूपी में इलेक्शंस के, यूपी इलेक्शंस में? what will happen in the UP election? कि जब आप एसकेएम की तरह जो आप सब डिस्कशन करते हैं, आप निश्चय लेते हैं, तो आप कैसे लेते हैं, प्रोसेस क्या है? How do you take decision in the United Farmers Front? निर्णय करने में वो प्रोसेस जो है, पद्धति What is the procedure to take decision? ये है कि सब लोगों से चर्चा कर लेते हैं, जो सही चीज होती है उसको We discuss and whatever is found correct is implemented. कौन सी सही है, कौन सी ठीक बात है, उसका पता चल जाता है और उसके आधार पे So we decide whatever is right on the basis of the discussion. उस टाइम पर ठीक ना हो, उसके रिजल्ट ठीक ना आते हो, तो बहुत समझदार लोग भी होते हैं, यूथ भी रहते हैं, यूथ थोड़ी सी गहन बात करते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं वे अपने तजर्बा की बात करते हैं। तो एसकेएम So इसीलिए there are people in the discussion, there are inexperienced youth, and then there are experienced people. So all kind of people used to put their point of views forward. एसकेएम इसीलिए 13 महीने तक चला। So the SKM worked for 13 months. And I assume that it will keep on working like this. In UP, the people are upset. अब क्योंकि कोविड की गाइडलाइन ना की ना कोई पब्लिक मीटिंग होगी, अब तो जनता को So now due to COVID guidelines, no public meeting is supposed to take place. उसके खर्चे कम हुए या बढ़े, So we don't need to tell people. The people know whether inflation has increased or not, whether the prices of kitchen gas has increased or not. We don't need to tell the people, they understand each and everything. कितना रस लेते हैं लोग यहाँ आपके आंदोलन में, और हम देखते रहेंगे जनवरी 15 से, जब उसके बाद हम देखते रहेंगे और आपका समर्थन करते रहेंगे। आप जो लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि हम बता नहीं सकते कितनी महत्वपूर्ण है, देश के लिए, भारत के लिए और दुनिया के लिए भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। और धन्यवाद much. सबका जो जितने इतने दिलचस्प प्रश्न I पूछे, thank each and everyone के लिए भी बहुत शुक्रिया। who were here. and का शुक्रिया जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जो I हम thank Daljit Ami who translated it in the English. सबका शुक्रिया। स्पॉन्सर्स Thank पंजाबी you everybody. Thank you sponsors, Punjabi Literary and Cultural Organizations and other co-sponsors. राकेश साहब बहुत बहुत आपकी यानी गुड लक आपके लिए कि Mr. आपका Rakesh, thank you very much and good luck. और जीत के बाद And I जीत wish that your की कामयाबी आपको movement keeps on going. Thank you very much.